welcome to all of you. Today we'll discuss about how to write answers for the IAS Mains examination. Now, IAS Mains examination, or in general, civil services, is about good communication. So answer writing, becomes a very key part. So let's understand in just few minutes what are the what are the nuances of a good answer and what should be the anatomy of the answer. Now, quickly, what are the mains examinations? So mains examination has two pillars. One is the qualifying paper and paper which are counted in merit. So we have Indian languages in qualifying paper. Both of them are 300 marks. Okay, you have to score 25% minimum, and there is a compulsory English. So Indian languages, as per the 8th schedule of Indian Constitution, there are 22 languages. You can choose any one of them. ये qualifying paper होता है. Then there are merit papers. One is the essay paper, 250 marks का होता है. 4 GS paper, GS 1, 2, 3, and 4, and there are 2 optional papers. So there are total 7 papers in the merit and 2 papers in the qualifying. So total 9 papers आप mains में देते हो. Now all the papers, the merit one is 250 marks. Now final marks is marks in the mains plus interview guidance. Remember, interviews, whatever marks you get in the personality test interview plus mains is the final merit. So prelims is only for the screening test. Marks are not counted in the final merit list. That is the prelims marks. Final merit list will mains plus interview. Now there is a common saying among the aspirants that mains decide the selection and interview decides the rank of the candidate. So it is very true. So if you want to get selected, it is only when you write good answers or when you have good command over the mains examination. So आपको mains बहुत अच्छा करना होगा अगर आपको selection पाना होगा. So if let's go a little more in the history. Now here GS papers optional सब में on an average 20 questions एक paper में आते हैं. There are 7 papers. So 20 into 7 is 140 answers आपको exam में लगभग लिखने होंगे. And so it is very important that you are able to write these answers in the time-bound manner. So what are the the syllabus? If you already know, essay, it can be any medium, and there are four papers: GS1, GS2, GS3, and GS4. GS1 is heritage, culture, history, geography. GS2 is governance, constitution, polity, social justice, international relations. GS3 is technology, economic development, security, biodiversity, and disaster management. Paper 4 is GS4 is ethics, integrity, and aptitude. So all these papers are 250 marks, and essay is also 250 marks. There are optional subject also, there are 250 marks. This we already discussed. Total the mains marks plus interview is 2025 is the selection merit list. Now what are the positives and what are the strength of a good writing, good answers? How do you write? So do's, what are the positives and do's? The first is read the question very properly. If the question is written, read them at least twice to understand what exactly question is asking. Second is observe the word limit and time limit. Calculate it. So the word could be 200 words or 250 words. Essays or 1200 words, 1000 words. So you need to understand what is the word limit, what is time limit. Per question, per paper, how much time I need to invest. Analyze whether you can attempt the question or not. Whether you know the question. आपको पता है कि नहीं है. अगर आपको नहीं पता है, it is better not to attempt it. You can attempt the other one. You can attempt questions only when you feel that you know the questions very well. You have an understanding about the issue. हो सकता है पूरा ना पता हो, थोड़ा पता हो, but at least you should have that approach. Second is understand the question fully. उसमें keywords क्या हैं? For example, let's take an example. So Make in India will usher industrial development in India. So Make in India will usher industrial development in India. Let's say this is a question. Analyze. So critically analyze. So what is Make in India? Keyword could be Make in India. Keyword could be industrial development. And analyze. You have to analyze it. So positives, negatives, or maybe whatever the question is asking. So emphasize on the keyword. उसमें keywords कौन से हैं उसको आप पहले identify कर लिया and focus on them more. The next would be, in case attempting paper, start with the best answers. जब भी आप paper attempt कर रहे हो, 20 questions हैं, start with the best questions. जिसको आपको best पता है. See, in UPSC you'll get a booklet form. All the questions will be there one after another. जहाँ पे भी आपको confidence ज़्यादा है, आप वहाँ से start करो, because that will set the momentum of your answers. The next is plan your answer before starting. एक common problem है, आपको पता नहीं होता answer कैसे लिखना है, कहाँ से start करना है. What students do कि वो कुछ भी लिखना शुरू करते हैं. No, plan your answer. आपको 10 minutes मिल रहा है एक आंसर को लिखने को, well and good. At least plan maybe 1 or 2 minutes. एक structure define कर लो कि मुझे क्या क्या लिखना है, introduction में क्या होगा, body में क्या होगा. So maybe when you are starting, जब आप answer writing start कर रहे हो, you can invest almost 20% of your time on the planning the answer. Later on, जब आप when you are
मे बी यू आर मोर स्किलफुल, तो आपको प्लानिंग आप पैरेलली कर सकते हो, आपको अलग से प्लानिंग नहीं करना होगा, इट कैन बी विद द आंसर, ठीक है. सो दीज आर द प्राइमरी थिंग्स. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द वर्ड लिमिट, फोकस ऑन द बेस्ट आंसर्स यू कैन राइट एंड प्लान द आंसर्स. नाउ व्हाट शुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी, एक गुड आंसर का एनाटॉमी क्या होता है? Answers broadly has three areas. One is introduction, जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो. The second is the body, the detailed part, and the last is जब क्वेश्चन को end करते हो, that is conclusion. So let's go one by one. Introduction कितना होना चाहिए? Introduction should not be more than 10% of the word limit. For example, if you're writing 200 words या 250 words, तो इसका 10% कितना होगा? 20 to 25 words. आपका इंट्रोडक्शन उतना ही होना चाहिए जितना क्वेश्चन पूछ रहा है. If you write more introduction, more words in introduction, तो आपका जो वर्ड लिमिट होगा वो आप यूटिलाइज कर पाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू राइट गुड आंसर. सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस रिक्वायर्ड कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए. इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा फोकस है कि हम फोकस करें बेसिक लेवल पर. द सेकंड वुड बी बॉडी. व्हाट इज अ बॉडी? द मेन आंसर. इट कैरीज फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन विद एम्फेसिस ऑन कीवर्ड्स. ठीक है, आप कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हो. इंट्रोडक्शन एक और चीज है, इंट्रोडक्शन आप बेसिक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो. जब बॉडी में जाते हो, फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस क्वेश्चन था मेक इन इंडिया वाला, इसको अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू कैन जस्ट इंट्रोडक्शन. मेक इन इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द गवर्नमेंट which seeks to enhance the contribution of manufacturing sector of India, which is around 14% today to 25%. Make in India has following pillars. तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है. Then you can go in the body. आप डिटेल में जा सकते हो. It carries forward the introduction with emphasis on keyword. Body should be contained in small paragraph. एक और कॉमन मिस्टेक है, बच्चे स्मॉल पैराग्राफ में उनको लिखना बहुत जरूरी है. Don't write in one go. You can write 30 to 40 words का एक पैराग्राफ लिख लो, which means in an answer of 200 words you should have at least 4 to 5 paragraphs. पैराग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपको स्ट्रक्चरिंग में आप एक अपना लाइन ऑफ थॉट चेंज कर सकते हो. मे बी इट मेनी टाइम्स इट गिव्स अ फ्लो. और जो चेक करता है उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. जो चेक करता है उसको ये समझ में आता है, जो उसका जो स्पैन है, आई स्पैन है, वो एक ही पैराग्राफ तक रहता है. तो दैट काइंड ऑफ गिव्स मोर स्ट्रक्चर टू द आंसर. So body should be continued in small paragraph with paragraph should contain the new idea. आप जब पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो नए आइडियाज पे जाइए. अगर एक पैराग्राफ में भी पॉजिटिव हो सकता है तो दूसरा पैराग्राफ क्रिटिसिज्म्स हो सकते हैं. सो बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट इन स्मॉल पैराग्राफ्स एंड ऑलवेज रीड क्वेश्चंस व्हाइल राइटिंग. बीच में क्वेश्चन पे भी वापस जाइए. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आप मिस कर जाते हो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चन. So while writing also maybe just re-looking, maybe just maybe for few seconds आप क्वेश्चन देख लीजिए कि आप ट्रैक पर हो कि नहीं हो. So that is the body of the answer. The last one is the conclusion. आप आंसर जब एंड करते हो. अच्छा, एक चीज और है, बॉडी में आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, डायग्राम यूज कर सकते हो. देयर इज नो आप ऐसा नहीं कि आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हो. यू कैन राइट द वे यू वांट. फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, डायग्राम हो सकता है. You have to make a presentation very lively. It should garner the interest of the examiner. Examiner को लगना चाहिए कि आपने अच्छे से आंसर लिखा है. Conclusion, it should be very logical. Again, conclusion should not be more than 10% of the word limit. यानी again 200 word के आंसर में 20 to 30 words upper limit है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे ही होना चाहिए. You can use innovative methods. Ideally, innovative methods, flow charts और diagrams यहाँ से ज्यादा आप body में use करिए, but here also it can be used. Be very brief and precise. To the point लिखिए. Question क्या पूछ रहा है? Conclusion क्या होना चाहिए? 2 lines. Think from the examiner's point of view. Examiner does not have the whole time in the world to check your answer. Examiner के पास time नहीं है. So you should try to understand what exactly examiner is looking. Avoid repetition of point. Point की repetition ना हो. Innovation, नए ideas हो, novel elements हो उसमें. Avoid flowery and ornamental language. Ornamental language मत use करिए. Keep answers very simple to the point. So that is how it should be. Also, introduction should be पॉजिटिव होना चाहिए. इफ इट इज अ प्रॉब्लम इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड इट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तो इस तरह का नेचर भी लेके चलिए. यू आर अ पर्सन, बिकॉज आंसर राइटिंग इज ऑल्सो अबाउट, जो आंसर लिखते हो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कन्वे व्हाट यू फील इनसाइड थ्रू योर आंसर्स. सो दैट इज द कॉमन अप्रोच ऑफ गुड आंसर. कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? They do not follow introduction conclusion. Introduction conclusion लिखते ही नहीं, जनरल लिखना स्टार्ट करते हैं. Many times you do not follow a balanced approach. UPSC is about balancing things. You should not be overcritical. You should not be over supportive. आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए. Follow the requirement of the question. Question क्या पूछ रहा है, चाहता क्या है क्वेश्चन. Read it again and again. Many times question ही समझ में नहीं आता है.
आप बहुत कम डायमेंशन कवर करते हो. यूपीएससी के आंसर इज अबाउट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू. सो डायमेंशन, या आप इकोनॉमी में जा रहे हो, पॉलिटी में जा रहे हो, या बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हो, मेंशन पॉइंट्स, एस्पेक्ट विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, फैक्ट्स, डेटा, ये बड़ा जरूरी हो जाता है. फैक्ट विल सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट. तो कई वो लोग लिखते ही नहीं है, वो समझाते हैं बट फैक्ट नहीं लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं. Mention reports or information like second ARC whose recommendations can be used. Don't attempt, if you are unaware. अगर आपको आंसर नहीं आता है, छोड़ दीजिए, मत लिखिए. ये this is not a university examination जहां आपको कुछ भी लिखने में नंबर मिलेगा, नहीं. You will get marks only for writing quality answers. So these are the common mistakes which should be avoided while writing answers. Okay. So that is all. Thank you very much for your time and patience. We'll be coming with more videos on these.